Okay guys, so as I told you, this video we are planning for minimum B1 level so that you're aware with the French language and you know what to follow exactly so I can guide you properly. The way I told you, okay, where to start and how to start. If you're also facing such difficulties, then this video is for you. Definitely what we have to understand or what we have to accept is key all level, like all aspects are interrelated with each other. It's not like कि मुझको speaking सीखना है at then everyone wants to upgrade their speaking skills. It's not like कि अपन speaking focus करेंगे. No, that's a bad choice. Correct. For example, if I want to speak something but I don't have arguments, I don't have vocabulary, I don't have proper grammar aligned, so how I can speak it out, right? So at the end, I'll be moving myself towards failure, not success. So that क्या होगा? Motivation will end up very soon and you are like fed up. No, it's not working. Let it be. ट्रेनर गलत है या फिर मैं गलत हूँ, any reason will come up and you will stop your French language journey. So the very first important strategy is daily listening practice, right? For example, being a Hindi speaker or English speaker, like हम लोग daily English और हिंदी सुन रहे हैं. अगर I'll give you the very practical approach. If you're following something, अगर आपको कुछ चीज प्रॉपरली समझ भी नहीं आता है ना, if you heard something very lightly also, you will understand it. You will assume it कि ये बोल रहा होगा या फिर ये सोच रहा होगा एक्सप्रेशन से, राइट? बट सिमिलरली अगर हम फ्रेंच को वैसे फॉलो नहीं करेंगे तो इट वॉन्ट वर्क इट आउट. So daily listenings makes your ear strong and you will also understand and analyze the word vocabulary very correctly. Correct. So I am using, like I prefer कि आप लोग भी ये प्लेटफॉर्म चूज करो. Tevis Sankpon and RFE Sawa, they do have very good content. Though we are guys are working with their trainers, so we know how to access it. I'll give you the short example, like you can follow the same, and if anything comes up, definitely feel free to reach me out. One second, let me share my switch my screen. So when you come to Tevis Sankpon, for example, let's say you are in B1 level. तो प्लान B1, इट्स नॉट लाइक कि अगर आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैसे प्लान करते हैं अपना लर्निंग और रिवाइजिंग स्ट्रक्चर इज कि इफ दे आर इन B1 लेवल और B2 लेवल ना, वो A1 से स्टार्ट कर देते हैं जर्नी अपना. आई ट्रस्ट मी गाइस, मोटिवेशन जो रिफ्रेश करने का या फिर किसी चीज को सीखने का ना, स्टिल एंड इन वेरी क्विकली, लाइक 5-7 days, 10 days, 20 days मैक्सिमम. तो 5 से 20 दिन के प्लान में आप क्या करोगे? आर्टिकल डेफिनी ऑल दिस स्टफ, बेसिक स्टफ करते करते ही आप इवन भी नहीं रैप करोगे, आपका मोटिवेशन खत्म और B2 वहीं का वहीं खड़ा रहेगा. ओके, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम व्हाट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स फेस्ड. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग because we guys are serving in this market from last 7 years and we are seeing the similar problem. Okay, for example, अगर आपका B2 लेवल भी है, if you're saying कि सौरभ I'm not in touch with language from long, तो आप एटलीस्ट एक प्रायर लेवल पे आ सकते हैं, बट नॉट degrade yourself for A1 A2. करेक्ट. बिकॉज अगर मैं आपको आज भी कुछ A1 का नया चीज लॉन्च करूंगा तो यू आर अनअवेयर, यू आर लाइक इट्स गुड. इट्स नॉट लाइक कि बट लेवल तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि हम हमेशा ही A1 में बैठे रहेंगे, बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट sure, that we don't know the vocabulary, right? Because every domain carries a different vocabulary and different learning. Okay, so for example, Tevis Sankpon Bea. Okay, first or second link pe you will be seeing B1 intermediate or B2 avanced. Okay, so there are multiple modules are available. You can use any of it, but my recommendation is whichever the topics relates you or give you the sense कि I'm interested in this, start with that. Correct. क्योंकि हमको daily listening just to make our ear strong, this is the proven therapy that we have to follow. And इनका जो content planned है, it's very systematic and creative, so that कि आपको ये help out जरूर करेगा उस language journey में. For example, जैसे Swiss Bientôt de restriction, right? Just open this. I'll tell you कि कैसे इसको यूज कर रहे हैं मॉड्यूल्स को. करेक्ट. So when you go to commercial exercise, okay,
you can see the video. Okay, तो अब करना क्या exactly? This is more important. Pay attention. So just En tablette, en poudre, sous forme de fèves ou de lapin, la Suisse produit chaque année 200 000 tonnes de chocolat, mais les 3/4 partent à l'étranger, notamment en Europe. L'Union européenne correct. So I do have understanding कि शायद आपको 2-3 minutes का video span range चाहिए. Okay, I'm not sure कि आपको 100% समझ आए या 5% समझ आए, 20% आए. Don't panic. It will be auto saving in your subconscious mind, right? I'll tell you like how it works. For example, सब लोगों ने अपनी लाइफ में एग्जाम्स दिया होगा, right? So exams जब हम करते थे, so we do remember, यार, I heard something similar, I read something similar, so we start retaining it. So I just want कि अगर आप ये daily follow करोगे, also you start reacting similar way earlier you do, okay? तो अब आपने जब इसको listening करोगे, तो you will get some glances, some vocabulary, just एक understanding मिलना चाहिए, because if you're carrying B1 level, okay, and then go to transcription, and then again start video. Centre 55% By de nos following exportations. by following this transcription. अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके एक साथ और सेंसेस अपडेट हो जाएंगे. Earlier you're listening and your mind reacting. अब यहाँ पे आपका eyes भी react करने लगेगा. Your vision is also start working. करेक्ट. साथ में आपको प्लान थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन मॉडल्स स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इंग्लिश स्पीकर है, हम हर चीज ट्रांसलेशन को ही देखते हैं फ्रेंच में, राइट? तो अब आपका क्या होगा कि जो 5% है, इट विल अपग्रेड टू 15-20% और 30%, डिपेंड्स, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, राइट? आपके डेली करेंगे तो अब आपको इसमें लर्निंग क्या मिल रहा है, आपका एक फ्लो बन जाएगा डेली, स्टेप बाय स्टेप में स्टार्ट अपग्रेडिंग. ओके, एंड द बेसिक प्लान इज कि मिनिमम 20 मॉड्यूल्स करना गाइस, किसी भी एक चीज का एटलीस्ट 20 to 30 डेज फॉलो करना, तभी आपका एक रिदम और एक रिटेंशन क्रिएट होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क आउट. 5 days 7 days में इंग्लिश सीखें, फ्रेंच सीखें, ऐसा कोई क्लेम नहीं होता, राइट? अगर ऐसे आप कोच देख के अनाउंस कर पा रहे हो, द बेस्ट विशेस हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट लिसनिंग भी हो गया, यहाँ पे हमारा स्पीकिंग भी हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, राइट? इफ यू वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज आपने लिसनिंग करा है, it won't take a lot of time, just एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, you can follow that too. Okay, let's get back to the document and specific grammar. For example, आपने B1 लेवल तक किया हुआ है, B2 लेवल तक का किया हुआ है, तो you can list it out all the grammar topics. I would say कि B1 में हमारा major grammar खत्म हो जाता है, just कुछ topics हैं जो कि आपको B2 में भी रिफ्रेश करने होते हैं, like subjunctive और conditional passing और future is all done. Future anterior we don't use very often, right? So you can list it those topics and refresh it up. It's not like कि मुझको article defini में issue है कि नहीं, correct? जब आप writing speaking पे आओगे तो it will auto corrected, correct? आपको एक sense मिलना start हो जाएगा, आपको एक path मिल जाएगा basically. Okay, so only certain topics. For example, जैसे कि if you are learning French with us, so we will be giving the proper creative plan कि how to follow, what to follow exactly. Okay, just 1 second, let me give you the understanding. For example, grammar notes and refreshers. So we will be guiding you each and every grammar topic so that you're not wasting your time and you can refresh at your own pace. Okay, like all future, all tenses, because tenses needs to be done. You know the tenses, but tenses के variation कैसे होते हैं, that you will be understanding. That is more important, like how to applicate grammar rules in speaking writing skills. For example, the concordance देता हूँ, हाँ, like it is very important to know, like कैसे situation में कैसा variation चाहिए, like present होना चाहिए, present ऐसे compose होना चाहिए ऐसे situation में. So we have listed all the important stuff which will resonate with you, and you will be getting more clear vision. And definitely if you got stuck, we guys are always open for you, right? And explore reading and comprehension, right? आपको मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, कभी भी आप रीडिंग लिसनिंग करो, करेक्ट, प्लीज बी विद योर थीम्स. को पता होना चाहिए कि अगर आप डेल्फ B1 या B1 की रेंज में हो तो कौन सा एक स्पेसिफिक थीम सेट है जो हमको फॉलो करना चाहिए. Delph carries different theme and F or DCEF carries a different theme, right? So अगर आपके पास वो theme का list नहीं है, definitely we can add on this files, right? I'll recommend you
कुछ प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स लाइक slate.fr, Le Monde or 1 Minute or RFE articles. But my preferable is slate.fr. Like how it works, I'll give you the understanding. If you go to slate.fr, right, you can see the list: mon, societe, politics, economy, culture, tech, correct. And these are the major themes जो कि आपके लेवल रेलेवेंट है, राइट, जो कि B1 B2 के थीम्स पे मैप्ड है. ओके, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. एंड लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग दिस थेरेपी, इट्स नॉट लाइक कि हमको एकदम से बड़ा बड़ा सा रीडिंग करना है, राइट. तो मेजर डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, लाइक ड्यूरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की कितना बड़ा है. ओके, बेस्ड ऑन दैट whichever the topic makes you more sense, you can read those. Because initially हमको पूछ रहना, it's very much important. Okay, you can see tons of topics like chat GPT, जैसे currently artificial intelligence, it's more important, right? Even अभी recently France centers में artificial intelligence पे exposé build हुए हैं, correct? So this gonna be very helpful for you. Okay, and I'll be adding those links in this sheet only, so that it's more handy for you. And like whatever you're resonating, whatever you're reading, whatever you're understanding. For example, if you say ki I do have similar experience, I do have such scenarios very similar to this topic, try to write on those, like daily 80 words जैसा plan करो, so that your grammar be aligned. आपका जो vocabulary जो आपने सीखा है, आपने जो सुना है, वो आप ऑन पेपर ला सकते हो. बिकॉज once you're writing ना, you do have lot of time with you. Okay, you can make more sensible stuff. Okay, and at the end speaking, तो आपने जो ये सब कुछ किया होगा ना, यही हम उसको speak out कर सकते हैं. Because if you know the vocabulary, if you know the grammar, if you know the arguments, or if you're able to write it down in a correct syntax, correct structure, then you're able to present it, right? And best is कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, this is gonna be very sensible. So all four aspects have a proper connection. For example, listening provides vocabulary, reading gives you the understanding, writing build your grammar accuracy and vocabulary usage. Similarly, whatever you understand, you can put it on speaking. Okay, so this is all about this module, right? And if you guys do have any difficulty or any problem, I'm inserting one link where you can book 1-to-1 session with me for a free, or with my team, correct? So that we can help you wherever you are getting stuck. It relates to grammar, it relates to anything or any guidance, whatever. If you do have any question, feel free to reach out to us. Thank you so much, guys. Merci beaucoup. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.